guys, welcome back to my channel. If you are new here, hi, my name is Himanshi and I would be really happy if you take a moment and subscribe to my channel down below. First of all, I'm really very sorry. ये वीडियो लास्ट वीक अपलोड होनी थी बट कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से मैं स्केच कंप्लीट नहीं कर पाई थी. सो लास्ट वीडियो में मैंने सुमेध मुदगलकर का स्केच हेड टू नेक कवर कर दिया था एंड टुडे आई एम गोना कंप्लीट दिस स्केच. सो मैं यहाँ पर रेफरेंस पिक्चर के अकॉर्डिंग पेंसिल ग्रेड्स यूज कर रही हूँ और कुछ एरियाज में मैं एक ही ग्रेड के पेंसिल से शेडिंग कर रही हूँ. बस फर्क इतना है कि मैं लाइट एरियाज में पेंसिल पर प्रेशर नहीं दे रही हूँ और डार्क एरियाज में पेंसिल पर हल्का सा प्रेशर अप्लाई करके शेडिंग कर रही हूँ. ज्वेलरी में मैं रैंडम स्क्रिबलिंग कर रही हूँ. हाइलाइटिंग के लिए मैं इरेजर पेन, नीडेबल इरेजर और नॉर्मल इरेजर्स यूज कर रही हूँ.
बालों में मैं चारकोल पेंसिल यूज कर रही हूँ और फ्लैट ब्रश की हेल्प से उसे ब्लेंड कर रही हूँ। ओके गाइस, सो मैंने बैकग्राउंड में चारकोल पाउडर यूज किया है और अब मैं बैकग्राउंड में लाइट्स शो करूंगी। कुछ जगह मैं नीडेबल इरेजर से हाइलाइटिंग करूंगी और कुछ जगह नॉर्मल इरेजर से हाइलाइटिंग करूंगी। अब मैं बालों के साइड में थोड़ी हाइलाइटिंग करूंगी विद इरेजर पेन। उसके बाद मैं चारकोल पेंसिल से स्ट्रोक्स बनाऊंगी जिससे रियलिस्टिक हेयर वाला लुक आए। अब मैं व्हाइट एक्रिलिक कलर से पर्ल्स में कलर करूंगी और ज्वेलरी में कुछ जगह कलर करूंगी।
फाइनली आई एम डन विद दिस स्केच एंड आई एम सो हैप्पी कि फाइनली ये स्केच कंप्लीट हो गया है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको ये स्केच कैसा लगा, और हाँ, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। Also, don't forget to subscribe my channel. See you soon in the next video. Till then, take care.